Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we are discussing important current affairs for 13th, 14th and 15th of December. The session will be quite interesting and important, students. Stay tuned with us till the end. In this video we are talking about 11th edition of India International Science Festival. Then we are talking about India's first indigenous hydrogen fueled cell vessel was flagged off in Varanasi, UP. Then Bharatiya Bhasha Utsav 2025 was organized in New Delhi recently, and then we are talking about an MOU that has been signed with Amazon to boost the PM Vishwakarma artisans. All these things and many more will be discussed in this video, students, so stay tuned with us till the end. If you are new here, students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs, students. First is 11th edition of India International Science Festival. It was held where in Panchkula, Haryana. So location is important, students. Question can be asked that where was the 11th edition of International Science Festival held? In Panchkula, Haryana. It was organized by whom? It was organized by Ministry of Earth Science. Right? It was in collaboration with Indian Institute of Tropical Meteorology of Pune, Maharashtra. This was held from 6th to 9th of December. And where was it held? In Panchkula, Haryana. Very important. There was a theme on which it was based, students, which is also equally important that I want you all to remember. Vigyan se Samriddhi for Atmanirbhar Bharat. This is the theme that I want you all to remember here. Correct? That is Vigyan se Samriddhi for Atmanirbhar Bharat. Here the focus will be on using science for self-reliance, national development and economic growth. Correct? Take a note of this, students. And as I mentioned, this was the 11th edition here. Moving on. Next is Sarbandana Sonowal has flagged off India's first indigenous hydrogen fuel cell vessel in Varanasi, UP. Right? It is hydrogen fuel cell vessel. Correct? And here hydrogen fuel will be utilized in this vessel. And students, we have also seen that earlier various trains, buses, and now we are seeing these vessels will be utilizing hydrogen. We are seeing in Karnataka also hydrogen manufacturing plant is coming up, and in the future, students, mark my words, and we have discussed this again few months back also, last week also, that hydrogen fuel will be the promising fuel we will be seeing in the future that will be replacing your normal petrol and diesel, because hydrogen on its burning it releases water in the form of vapor which is clean and it does not create pollution. Hence this hydrogen fuel is being bet upon. Right now research is going on it, correct, and we have seen that it is a promising research where we will be seeing that this fuel can be used in various vehicles. Here it is your vessel, as you can see it in the picture. This is the hydrogen fuel cell vessel that is the first of its kind, indigenously built, that has been flagged off by Sarbandana Sonowal in Varanasi, UP. Correct. Here you can see one more thing. This is Matsya 6000. This is India's first human-occupied deep-sea submersible developed by National Institute of Ocean Technology, and this is for deep ocean missions, right? And 6000 means it can go up to the depth of 6000 meters. So remember about this vessel also. Then coming back to the news, it was Sarbandana Sonowal. We have launched India's first indigenous hydrogen fuel cell vessel, and this is the pilot one, where in Varanasi, UP. It has been constructed by Cochin Shipyard Limited. This is another important question, students, that I want you all to remember. Correct? And here it will be focusing on India's maritime vision of 2030 and maritime Amritkal vision of 2047. Next is Ministry of Education. They have organized Bharatiya Bhasha Utsav 2025. It was organized in New Delhi and it was at the National Bal Bhavan in New Delhi to mark the birth anniversary of Tamil poet Mahakavi Subramanya Bharati ji. Correct? This event was held under the theme. This is the theme, students, and an important question that can be asked here is that what is the theme under which Bharatiya Bhasha Utsav 2025 was
hosted. So it was under the theme many languages, one emotion. Correct? Take a note of this, students. This is the theme I want you all to remember. Correct? Very important. Take a note of this. Correct? And next question can be asked that Bharat Bhasha Utsav was held to mark the birth anniversary of whom? This is another question. That is Tamil poet Mahakavi Subramanyam Bharati ji. Next is Ministry of MSME. They have signed a memorandum of understanding with Amazon to boost PM Vishwakarma artisans. I repeat, Ministry of MSME. They sign an MOU with Amazon Seller Service Private Limited to strengthen market access for the artisans that are registered under PM Vishwakarma scheme. Right? This will enable the traditional artisans so that they can access the online market. Right? They can expand their visibility. They can have a larger audience, correct, and increase their customer base right? So it is Ministry of MSME. They have signed this MOU with Amazon to boost PM Vishwakarma artisans. Important. Here students, remember two things, correct? First is here this Ministry of MSME, they have partnered, also signed an MOU with Amazon Seller Services, correct? So with this Amazon Seller Services, this basically this initiative will provide these artisans, these workers, these sculptors, right, these locksmiths a larger audience. Next is international affairs. Art on Capital, they have recently released the passport index, and here it is UAE that has secured the top position as the world's strongest passport, and our country India, we were ranked at the 67th position. I repeat, this Art on Capital, it is a Canada based company, right? It is a financial advisory firm, Art on Capital. They have released passport index 2025, and according to them, it is UAE that has secured the top position, right? And it is the world's strongest passport for the 7th consecutive year. They have access to visa free countries. How many? 126 visa free countries access they are giving to their citizens. On second position, it is Singapore, then it is Spain. If we talk about our country, right, we were ranked 67th globally with a mobility score of 74. That means we have a visa free entry to 74 countries. This is the launched by Art on Capital, right? This is not for the Hellenian passport index, correct? It is for Art on Capital. Moving on, students, we have seen the top 3 positions also, right? Apart from this, students, you need to know about the World Inequality Report that was recently released. This is the 3rd edition of the World Inequality Report from the World Inequality Lab that highlights the extreme economic disparities that we are seeing within India. It says that the top 10% owns 65% of the total wealth, whereas the top 1% alone hold approximately 40% of the total wealth. Also, the women in India earn only 18% of the labor income, significantly below the global average of 34%. Next is Government of India and Liberia. They have signed a memorandum of understanding that will strengthen the pharmacopoeia cooperation, right? This will be focusing on enhancing the quality, on focusing on the standards, correct, for medicines. This MOU will allow Liberia to adopt or reference the India pharmacopoeia for establishing the quality standards for the medicines, for promoting the benchmarks that are between India and Liberia. Under this agreement, India and Liberia will follow similar procedures for testing and verifying the quality of medicines, ensuring consistency and safety across both the countries. Correct? In this, if we talk about this, what is this pharmacopoeia? Pharmacopoeia is basically official books of drug standards that are used by the governments and health regulators. Moving on, students. Next is World Inequality Report. We just discussed about this World Inequality, students, here, right? We will be discussing it here only. The top 10% Indian population accounts for 58% of the total national income, which is a huge amount of data, right? While the bottom 50% share only 15% of the net worth. This is highlighting the extreme income poverty in India. In India, top 10% own around 65% of the wealth, whereas the top 1% hold around 40% of the wealth. The average per capita income is approximately 6,200 euros
purchasing power parity, and average wealth is about 2800 euros, right? And for women in India, they earn only 18% of the labor income and have only workforce participation here, correct? Whereas if we talk about the global inequality remains high, with 10% earning more than the bottom 90%. Right, students? Take a note of this also. And who released this data? It was released by World Inequality Lab, and this is the third edition of this World Inequality Report for 2026. Moving on, next is, here you can see the data that we just discussed about. Next is banking and finance, students. RBI has issued the guidelines on transaction account across 7 categories of the regulated entities. I repeat, RBI, they have released the data. They have introduced key relaxations while maintaining the overall principal framework, right? The draft norms which were issued on October 1, they have covered the transaction account operations across 7 categories of regulated entities that include your commercial banks, small finance banks, payment banks, local area banks, regional rural banks, and cooperative banks, right? They will be coming into effect from 1st of April 2026, correct? Now what are these we are talking about, right? Cash credit account exclusion, right? Here RBI has acknowledged that these cash credit facilities functions differently from the current and overdraft account, as they mainly work, they are basically the working capital facility tied to the value of the borrower's current asset. Therefore the banks can now provide such cash credit facilities as per the need of the customer without any restriction. This will be coming into effect from 1st of April 2026. Then if we talk about exposure, or if we talk about the current account and overdraft facilities, right? If they have an exposure of less than 10 crore, that is, a bank may maintain a current account or overdraft account without any restriction in case of customers where the aggregate exposure of the banking system to the customer is less than 10 crore, right? And if it is more than 10 crore, a minimum of 10% share in the banking system aggregate exposure to the borrower is required, or a minimum of 10% share in the banking system's aggregate fund based exposure to the borrower is required. Moving on, next is RBI data. India's banking sector has hit a 20-year NPA low, records strongest profit surge. What is NPA? Non-performing asset. What are these? Say for example, there is an individual with a property A, right? He is saying that I want to take loan against this property, and he goes to bank. That person goes to the bank, and what he says is, I'll lend my property, give me a loan against it. This property is worth 1 crore rupees, and the bank says, okay, I'll give you a loan of 80 lakh rupees against it, correct? Now this property is with the bank, right? That means the papers, original documents of this papers of this property is with the banks, and against those property the loan has been sanctioned of 80 lakhs. In case this person is not able to pay back this 80 lakh rupees loan, then this bank will be acquiring this property, right? The bank will be entitled to sell this property and recover the loan, right? So now what happens is, this property, correct, is not able to being sold, right? That means the bank is not able to sell it, be it any reason, be it market scenario or whatever. There is no customer for this bank or property or whatever, that the bank is not able to sell this property. Now this property becomes an NPA, non-performing asset, right? Another case, an individual takes a personal loan of, for example, 20 lakh rupees, and he just pays 5 lakh rupees, and he is not able to pay back the rest 15 lakh rupees. Now this 15 lakh rupees also becomes the non-performing asset, right? This person, individual, becomes non-performing assets. So now what the data is saying, RBI's data, that the gross non-performing assets, right, has declined in the 20 years. We are seeing at the lowest number, correct? It was 11.46% in 2018, which is now 2.31% in March 2025. This is the lowest in 20 years. This decline was mainly driven by robust macroeconomic fundamentals boosting the India's non-banking financial sector, whereas net non-performing asset ratio has dropped to the lowest in the last 2 decades to just 0.2552% compared to which was 6.1 in 2018, driven by stronger provision buffers, correct? Apart from this, the total business of the public sector banks has increased from 203 lakh crore rupees in FY23, which is now 252 lakh crore rupees in FY24.
correct. So the profitability of these banks has also surged, correct. Whereas if we see, the strong capital buffer is also increasing, right. The domestic credit and deposits has tripled between 2015 to 25, whereas the credit has also been increased from 66.91 lakh crore rupees to 181.34 lakh crore rupees, whereas the domestic deposit has also increased from 88.35 lakh crore rupees to 231.9 lakh crore rupees, correct students. So take a note of this. Next is World Bank. They have approved the financing of $600 million for clean air programs in Uttar Pradesh and Haryana. That means $600 million has been approved by World Bank so that the air pollution that we are seeing in Delhi NCR region can be tackled, right. There is a very high pollution, almost 700 was the AQI in Delhi NCR region, which is quite high, right. GRAP 4 has been implemented in this region so that the construction activities are banned. Even the schools has been asked that they should take the online classes. Even the offices have mandated a 50% work from home for their employees, correct. So World Bank, what is now they are saying is that we will provide you the money, you work upon reducing the pollution in your area, right. You maintain the initiatives, you come up with certain initiatives how you can reduce the pollution. For that funding will be required, right. So that funding will be provided by us, and we are asking you that we will be able to finance you up to $600 million so that you can reduce the air pollution in those areas, correct. So take a note of this. Here the focus will be in Uttar Pradesh and reducing pollution in Haryana. Next students, here Uttar Pradesh Clean Air Management Program has been launched for 10 years, right, and budget here is almost $300 million, whereas for Haryana Clean Air Project for Sustainable Development, it is for 23.5 years, and here total budget is also $300 million, and World Bank will be financing it. Moving on, next is Odisha Power Transmission Corporation Limited. They have signed a long-term agreement worth 1,685 crore rupees with the National Bank for Agriculture and Rural Development that will enhance the state's power infrastructure and provide reliable electricity to the industries and the customers. This marks NABARD's first project financing to the state public sector undertaking in the state of Odisha. So this OPTCL, that is your Odisha Power Transmission Corporation Limited, they secured how much amount? 1,685 crore rupees. This is the loan amount that has been secured, correct. From whom? From NABARD, and this is for maintaining, for establishing power infrastructure in the state of Odisha, correct. Here the loan it is, so the interest will be of 7.75% per annum, and this tenure here is for 15 years and 3 years grace period will be provided. Next students is awards and recognition. Time magazine has named Architects of AI as 2025 Person of the Year. I repeat, Time magazine named the Architects of AI as the Person of the Year 2025, recognizing the individuals who designed, developed and advanced modern AI technologies, right. Who are they? Jensen Huang, Sam Altman, Elon Musk, Mark Zuckerberg, right, Dario Amodio, Fifi Lee, correct. These are some individuals that have worked very hard in promoting artificial intelligence, right. They are the one who are working upon the artificial intelligence, right, because we know for Sam Altman, he owns OpenAI, right. Elon Musk, Grok, right, that is the X platform, correct. Then we are seeing Google is working very good in the AI sector, Meta is working very good, Microsoft is working very good, correct. So all of them we are seeing that because of these individuals, they are heavily betting on artificial intelligence. Even we discussed few days back or yesterday only that Amazon, they are planning on investing large sum of money, almost 30 plus billion dollars in India in the next few years, where they will be working upon data centers, AI data centers. Even Microsoft, they are investing almost 50 to 20 billion dollar. This amount of money will be invested in the coming 4 to 5 years in India, where we will be seeing AI data centers will be established, correct. So AI is here students, AI is the future. Moving on, next is sports students. India will be hosting the inaugural Commonwealth Kho-Kho Championship in March 2026. It will be from 9 to 14th of March, and this is the first ever Kho-Kho or Commonwealth Kho-Kho Championship. Our country, India, we will be hosting it, right. Also, this announcement was made after that India has got that in 2030, India will be hosting the Commonwealth Games, where in Ahmedabad, Gujarat. We bid for it and we have won the bid here.
Next is obituary students. Former Union Minister Shivraj Patil has recently passed away, as you can see him in the picture. Passed at the age of 90 in Maharashtra. Born in 1935 in Maharashtra, correct? And he was associated with Indian National Congress, correct? And he recently passed away. Next is important day, students. International Day of Neutrality, observed on 12th of December, and it is to highlight the importance of neutrality in the international relation that will support peace, diplomacy and security worldwide. Correct? Take a note of this. It is observed on 12th of December. Next is International Universal Health Coverage Day. It is observed on 12th of December, and it is to raise awareness about the need for strong, resilient health systems and accessible, affordable, high quality health services for all without financial hardship. There is a theme here, students, that I want you all to remember. Unaffordable health costs, we are sick of it. I repeat, unaffordable health cost, we are sick of it. This is the theme here that I want you all to remember. First, it was observed in 2018. Right, students? Next is state news. Uttarakhand's Chief Minister Pushkar Singh Dhami has launched Meri Yojana portal. This is a platform that has been designed specifically for the citizens that will be provided with comprehensive information on the welfare schemes that are offered by center and state government. That means citizens here will be getting information about the schemes, welfare schemes that has been launched by state and central government, and this is for the citizens of Uttarakhand. Correct? So this is Meri Yojana portal launched by Uttarakhand's Chief Minister Pushkar Singh Dhami. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be quite beneficial for you all. Students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. So do watch these videos. These are quite refined videos that will help you for your preparation for the competitive exams. Apart from this, weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise are uploaded regularly. These contains multiple MCQs that will help you in your learning journey. Beneficial is that here revision is done. The questions that are framed here, the MCQs that are framed here, they are top notch and are in accordance with the exam pattern. Now students, let's move to the revision part. In August, where did Asian Development Bank approved a $125 million loan to transform the urban infrastructure and strengthen the climate resilience in the state. So this loan was approved for Assam state. Next, mention the bank that launched 2 fixed deposit backed secured credit cards that are issued on the RuPay network, allowing customers to leverage their fixed deposit as a collateral to gain credit access without income or credit history, because it becomes difficult for individuals that are not having any salary or income to gain credit cards. Right, so for them this will be a quite beneficial to make a credit history. So which is that bank? We are talking about the Suryodaya Small Finance Bank. Next, SEBI has introduced a revised framework to monitor intraday trading positions in index options that is aimed at enhancing the transparency and strengthening the risk management in the derivative market, which is effective from when? Which is effective from 1st of October 2025. Next, India's UPI crossed how many monthly transactions in August as announced by DFS and NPCI in September. So India's UPI crossed 20 billion transactions per month. Next, Bank of Baroda has unveiled a new BOB Digi Udyam platform, a fully digital collateral-free lending scheme exclusively designed for whom? It is designed for MSEs, right? Micro and small enterprises. And here they can have the cash credit and overdraft facility ranging from 10 lakh rupees to 50 lakh rupees. Next, identify the bank that launched a third edition of the Spursh Week, that is a landmark initiative from 1st to 5th of September, bringing over 1 lakh employees across 5,868 branches spanning across 40 cities across India under the theme Raise the Bar. It is Axis Bank. Take a note of this. Next, mention the company that collaborated with IDBI Bank and Punjab and Sindh Bank to provide unified collateral management services across India. It is Sohan Lal Commodity Management Limited. This partnership marks Punjab and Sindh Bank's first venture into collateral management services.
Next, in September, NPCI increased the UPI transaction limit to 5 lakh rupees only for those categories that align with tax payment. So identify the category which is not among the enhanced 5 lakh rupees limit. It is jewelry. Next, how much loan was disbursed by microfinance institutions in India in the first quarter of FY26 as per the 54th edition of the micrometer released by Microfinance Industry Network in India? So, which is how much loan amount it is? It is 22,805 crore rupees was disbursed by the microfinance institutions. Next, identify the financial institution that has committed 498 crore rupees to the Greater Visakhapatnam Municipal Corporation for the development of Madhurwada Sewerage System project at Madhurwada in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So identify that financial institution. It is IFC. What is IFC? International Finance Corporation. This is an arm of World Bank. Next, mention the saving account launched by Bank of Baroda in September for Indian citizens planning to move abroad for extended stays. So, mention that saving account that was launched here. The name is BOB Aspire NRE Saving Account. Next, mention the bank that has announced the launch of digital loan against mutual funds, a digital loan facility enabling the customers to avail loan against their mutual fund investment. So, which is that bank that is providing this facility? It is South Indian Bank. Next, mention the financial institution which approved a loan of $212.64 million under the Strengthening Coastal Resilience and Economy project, that is SHORE project. This is also important and I want you all to remember the full form here of SHORE. This is to support coastal zone management in Tamil Nadu and Karnataka state. So, which institution under SHORE project is providing the loan of 212 crore rupees for Tamil Nadu and Karnataka state? Which is that bank we are talking about, financial institution? It is World Bank. Next, identify the financial institution that launched a centralized digital credit infrastructure for regional rural banks that will enhance their competitiveness against NBFCs and microfinance institutions. So, which is that financial institution? That is your NABARD for agriculture and rural development. Next, in September, as per RBI's regulation of payment aggregator directions, non-bank payment aggregators applying for authorization, they must have a minimum net worth of how much amount at the time of application when they are filing it. So, they must have a net worth of around 15 crore rupees. Next, in September, RBI set up an independent advisory group on regulations to strengthen the stakeholders' engagement. Here, this advisory group, right, it will be chaired by whom? It will be chaired by Rana Ashutosh Kumar Singh. Next, identify the company with which AU Small Finance Bank has collaborated to launch AU Cosmo credit card built on the RuPay network to cater the growing preference of UPI payments in India. So, identify that company. It is Kiwi. Correct? And this card will offer a fully digital onboarding journey, seamless UPI integration, best in the class rewards on UPI transactions, and also will reflect the shared vision of AU Small Finance Bank and Kiwi for inclusive tech enabling banking. Next, identify the bank that was authorized by RBI in September as an agency bank to collect GST payments that became the first wholly owned subsidiary of a foreign bank in India to receive such an approval. And this is very important question, right? They will be collecting GST, right? And which is that bank? It is DBS Bank, correct? And it is the first wholly owned subsidiary of a foreign bank in India that will receive such an approval and they will collect GST. It is DBS Bank. Next, in September, PayRuPay, they partnered with BriskPay to expand Dash payment services and offer an integrated global payments platform. So they have expanded to cross-border payment services. Take a note of this, right? And they will be offering integrated global payment services. Next, which of the following mutual fund companies launched India's first equity long-short specialized investment fund named QSIF Equity Long-Short Fund? This was launched by whom? This was launched by Quant Mutual Fund. So, option 2 is right, Quant Mutual Fund. Next, in September, Bank of India, they partnered with Cash Invoice to launch BOI, that is Bank of India Trade Easy, a digital credit platform that provide instant loans
to whom this provide instant loans to the MSMEs, that is micro, small and medium enterprises. Through this, the bank aims to disperse 1000 crore rupees in working capital loans within the next 4 to 6 months, reaching more than 2 lakh MSMEs nationwide. In October, the DRDO they have signed an MOU with which organization under the Ministry of New and Renewable Energy to establish a 300 megawatt renewable energy project across India. So, which is that organization? That is Solar Energy Corporation of India, and the target is to become net zero carbon emitter by 2070. This is the target of India, right? And this will be developing a 300 megawatt of capacity of solar based renewable energy project, and it will be by DRDO. Next, identify the universities that has signed an MOU with Dr. Ambedkar Foundation in October to establish Dr. Ambedkar chairs. So, which is identify that universities. It is Mumbai University, Jaipur National University, as well as GB Pant University of Technological and Agriculture. So, right option is option 5 here. Right, with this new, these 3 Dr. Ambedkar chairs have been added. Total number of operational chairs now stands at 28. Next, mark the correct statement regarding Prime Minister Narendra Modi's visit to Andhra Pradesh in October in 2025. If we look at the options here, all these 3 options, they are rightly mentioned. Next, which of the following sectors did not feature in the MOU signed during the Mongolian president's visit to India in October? Among the following, it is defense procurement, right? That did not feature. So, on what we talked about digital solutions, we talked about geology and mineral resources, we talked about humanitarian assistance and disaster relief, as well as cooperation in the energy sector. We talked about digital solutions, science and education, culture and exchange, trade and economic development. All these things were talked about, but not defense procurement. Next, name the assault rifle for which the Ministry of Defence has signed a 659.47 crore contract in October with a consortium of MKU Limited and Medbit Technologies Private Limited to procure advanced night sight, that is image intensifier systems. It is SIG 716 assault rifle, right? This is designed for a service life of almost 10,000 operational hours or 10 years, whichever is earlier. Next, mention the world's first tri-service all-women circumnavigation sailing expedition flagged off by Union Defence Minister Rajnath Singh in December. So, what is the name of this? It is Samudra Pradakshina. Important students. Next, mark the correct statement regarding the State Mining Readiness Index 25 unveiled by the Ministry of Mines. So, what is the name here? Right, or which is the correct statement here? Right option is all 3 of them. Moving on, in October, UIDAI under MEITY launched SITA. SITA is your Scheme for Innovation and Technology Association with Aadhaar. Now, question asked here is, which organization has signed this MOU with MEITY Startup Hub and UIDAI to advance the objectives of SITA scheme? It is NASSCOM. Correct, it is NASSCOM. Now, under this MOU, MSH, right, here they will basically provide technical mentoring, incubation and accelerator support to the startups and innovators here, right? And here what will be NASSCOM doing? NASSCOM will be providing the connection, industry connection, entrepreneurial support if any required. Then next is, which Indian company has signed a strategic cooperation agreement with Embraer Defense and Security of Brazil during the Vice President of Brazil, Geraldo Alckmin's visit to India in October? If we look at the option here, so which is the Indian company that signed this strategic cooperation agreement? It is Mahindra Group, right? Take a note of this. And this agreement is basically to provide C-390 Millennium aircraft for the medium transport, that is a medium transport for, or basically this aircraft will be provided for this medium transport aircraft program of the Indian Air Force. Correct. So this is the aircraft that you need to remember, C-390 Millennium aircraft. Next, how much funding has the Government of India allocated for the Kapas Kranti mission launched in October to promote high yield cotton cultivation? So what is the amount allocated here? 600 crore rupees has been allocated here. And question can be asked that this Kapas Kranti is related to which crop? It is for cotton. Then an application was also launched, and even this application was launched in Hindi also.
Next, in October, the Department of Agriculture and Farmers Welfare under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare revised the guidelines for per drop more crop scheme. Under the old guidelines of PDMC scheme, what was the maximum funding cap for states and union territories to undertake micro level water storage and conservation projects? So under the old guidelines, what was the limit? It is 20%, right? And now it has been increased to what? This is your 40%. Right, with this, what is it? It will be promoting this per drop more crop, means with efficient usage of water we can grow more crops, right? Quantity of the crops can increase if we are sustainably and managing the water resources properly, and we are in agriculture we are providing the right amount of water when required. Next, in October, the 8th session of the Codex Committee on Species and Culinary Herbs was held where? It was held in Guwahati, Assam, where Codex stands for vanilla, coriander, dried seeds and large cardamom were finalized, right? And the total number of global spices standards developed by CCSCH is 219 now. Next, name the entity under Ministry of Electronics and Information and Technology that collaborated with the government of Uttarakhand to organize the Uttarakhand AI Impact Summit in October. So, name that entity. Which entity we are talking about? We are talking about India AI Mission, right? It was organized by the Department of Information Technology along with the government of Uttarakhand in collaboration with India AI Mission, and if the ministry is asked, that is MEITY. Next, identify the type of drug discovered indigenously in India to combat drug-resistant respiratory infections named nephithromycin, announced by Union Minister Dr. Jitendra Singh in October. So, what type of drug is this nephithromycin? That is in-house developed by India, that is indigenously developed by India. So, this is a kind of an antibiotic. Important, take a note of it, right? And this has been developed in collaboration with Wockhardt, that is a global pharmaceutical company in collaboration with the Department of Biotechnology. Next, identify the indigenous firearm produced by the Indian Army under 2700 crore rupees contract for 4.25 lakh units in October. So it is close quarter battle carbine. This is a kind of an assault rifle, right? And Indian Army has produced this firearm for 2700 crore rupees, and it is how many units? 4.25 lakh units will be procured, and it has also been developed in two segments where you will be seeing 2.5 lakh units will be supplied by Bharat Forge, right? And rest 1.75 lakh units will be developed by and supplied by Adani PLR Systems. Next, friends, is our homework question. First question is, what has been PMO renamed, right? Prime Minister's office has been renamed to what? Second question, which brand is the official beverage partner for Tata Women's Premier League for 26 and 27 season? Third question, tell me recently which edition of Konark Festival was observed and where is this observed? Fourth question, our country India has been re-elected to, okay, I have given the answer here itself. You tell me who became the chairperson of International IDEA. This is for 2026 term, right? Who has been appointed as the chairperson of International IDEA for 2026? Then fifth question, which is the world's largest city? World's largest city. Also tell me which is India's largest city. So these are your 5 homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video, and also hit the like button, students. So that's all for the day. Thank you and have a nice day. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 13, 14 एंड 15 दिसंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की, जो कि पंचकुला हरियाणा में हुआ। देन हम बात कर रहे हैं इंडिया की पहली इंडिजिनियसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल की, जो कि वाराणसी यूपी में लॉन्च की गई। नेक्स्ट थिंग हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा भारतीय भाषा उत्सव को लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। देन एक MOU डिस्कस करेंगे जहाँ पे अमेजॉन बूस्ट कर रहा है PM विश्वकर्मा आर्टिशंस को। यहाँ पे इनको ऑडियंस प्रोवाइड कराने का काम किया जाएगा, कस्टमर बेस इनका इंक्रीज करने का काम किया जाएगा।
तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा सभी के लिए। अगर आप नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। हम बात कर रहे हैं 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की, जो कि पंचकुला हरियाणा में हमें देखने को मिला। लोकेशन है पंचकुला हरियाणा। 6 से लेकर 9 दिसंबर तक ये इवेंट हमें देखने को मिला था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस अलॉन्ग विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि पुणे में था, इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। राइट, ये 11वां एडिशन है। फिर ये याद रखेंगे ये एक थीम पे बेस्ड है, जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स मार्क करके ज़रूर चलेंगे। विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। राइट, तो ये इस थीम पर बेस्ड था। एम क्या है यहाँ पे? एम है बेसिकली कि कैसे हम अपने जो अर्थ साइंस है, राइट, जो हमारा जो फोकस है साइंस के ऊपर, उसको हम सेल्फ रिलायंस बना सकें, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम कर सकें। करेक्ट। फिर यहीं पे मत्स्य 6000 को शोकेस किया गया, जो कि NIOT के द्वारा बनाया गया है। करेक्ट, लेट मी शो यू मत्स्य 6000। ये है मत्स्य 6000, राइट, जिसको अभी लॉन्च किया गया। ये बेसिकली 6000 मतलब 600 मीटर की डेप्थ तक ये जा सकता है। ये एक रिसर्च वेसल है, आप अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमंस भी इसके अंदर जा सकते हैं फॉर कैरिंग आउट द रिसर्च। करेक्ट, ये समुद्रयान मिशन के अंदर बनाया गया है, डीप ओशन मिशन के लिए। एंड 3 क्रू मेंबर्स इसके अंदर जा सकते हैं। NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। राइट, सो कमिंग बैक, कहाँ पर IISF कौन सा एडिशन था? 11वां। हुआ कहाँ पर? पंचकुला हरियाणा में। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं सरबंदना सोनोवाल, जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल वाराणसी UP में। हाइड्रोजन, देखो स्टूडेंट्स, हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रॉमिसिंग फ्यूल है, क्योंकि इसके बर्निंग पे वाटर वेपर निकलता है एज अ रेजिड्यू। राइट, कार्बन कंटेंट नहीं निकलता, तो ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। इवन हम देख रहे हैं कई जगह पे, जैसे कर्नाटका हो गया, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन के ऊपर काम करा जा रहा है, प्लांट्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। हमने देखा था ट्रेन्स, हमने देखा बसेज लद्दाख में टेस्ट हुई थी। राइट, फिर अब हम देख रहे हैं वेसल्स, इनको बनाया जा रहा है जो कि हाइड्रोजन पावर्ड होंगे, ताकि जो एक ट्रांजिशन हम देखेंगे फ्यूल्स का, जैसे फ्रॉम डीजल पेट्रोल टू हाइड्रोजन, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, वो भी एक सेक्टर होने वाला है। लेकिन आप मार्क के चलिए कि हाइड्रोजन फ्यूल भी बहुत प्रोमिनेंट होगा, एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रॉमिसिंग फ्यूल, जो हम आने वाले समय में अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि यूज़ होता हुआ दिखेगा। जैसे पेट्रोल पंप्स पे डीजल पेट्रोल बिकता है, वैसे ही आप देखेंगे कि हाइड्रोजन भी सेल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। एंड एक और चीज़, ये जो वेसल है इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा भारतीय भाषा उत्सव को भी ऑर्गेनाइज कराया। ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, ये किस थीम के अंडर था? मैनी लैंग्वेजेस 1 इमोशन, तो थीम पूछी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? तो ये तमिल पोएट, काफ़ी फेमस रिनोन तमिल पोएट महाकवि सुब्रमण्य भारती जी की ये बर्थ एनिवर्सरी पे हम ऑब्जर्व करते हैं भारतीय भाषा उत्सव। फिर तीसरा क्वेश्चन, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया इसको? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर इवेंट से, इस पर्टिकुलर न्यूज़ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर मिनिस्ट्री ऑफ MSME, इन्होंने एक MOU साइन किया अमेजॉन के साथ टू बूस्ट PM विश्वकर्मा आर्टिशंस। देखो कि पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि MSME ने किन के साथ पार्टनर किया PM विश्वकर्मा आर्टिशंस को बूस्ट करने के लिए? तो अमेजॉन, MOU के बारे में पूछेंगे। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि इससे होगा क्या? देखो इससे क्या होगा, जो आर्टिशंस हैं, राइट, जो पॉटर्स हैं, जो आपके कोई भी स्कल्पचर्स हो गए, टेलर्स हो गए, लॉकस्मिथ्स हो गए, राइट, कोई टॉय बना रहा है, कोई आपकी ज्वेलरी बना रहा है, तो ये जो आर्टिशंस है ना, इनको क्या होगा, ऑडियंस मिलेगी, इनका जो कस्टमर बेस है उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। राइट, तो इससे होगा क्या, एक
अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इनको एक ऑडियंस मिलेगी जहां पर ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ कस्टमर बेस इनको मिलता हुआ देखेगा एंड इसीलिए ये एमओयू यहाँ पे साइन किया है। इससे हम देखेंगे एमएसएमई को ग्रो करने का जो इंडिया का टारगेट है, राइट, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंडिया में जनरेट होगी, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी यहाँ पर होती हुई दिखेगी। एंड ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम 2000 सितंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। आर्ट ऑन कैपिटल, ये एक कनाडा बेस्ड ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म है, राइट। इनके द्वारा पासपोर्ट इंडेक्स अभी रिलीज़ किया गया 2025 का, जहाँ पे यूएई ने टॉप किया। ये हेलैंड पासपोर्ट का नहीं है, ये आर्ट ऑन कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स है। यूएई ने यहाँ पे टॉप किया। देन सिंगापुर आता है, सिंगापुर के बाद आ जाता है स्पेन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यूएई में 126 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस देखने को मिलता है, मार्क करके चलेंगे, राइट। फिर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम 67th पोजीशन पे आते हैं और इनके हिसाब से हम 67th पोजीशन पे हैं एंड 74 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस हमें देखने को मिलता है, करेक्ट। तो ये आर्ट ऑन कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स है एंड यूएई ने यहाँ पे टॉप किया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लाइबेरिया, इन्होंने साइन किया एक एमओयू जो स्ट्रेंथन करेगा फार्माकोपिया कॉर्पोरेशन को। देखो फार्माकोपिया क्या है, बेसिकली ये ऑफिशियल बुक्स होती हैं, ऑफिशियल बुक्स होती हैं मेडिसिन के ऊपर, मेडिकल प्रोसीजर्स के ऊपर, राइट। एंड इसके ऊपर यहाँ पे हमें कॉर्पोरेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो लाइबेरिया एंड इंडिया के बीच में जो कॉर्पोरेशन है इस सेक्टर में वो हो सके, राइट। ये जो ऑफिशियल बुक्स होती हैं ड्रग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, गवर्नमेंट्स एंड हेल्थ और रेगुलेटर्स यूज़ करते हैं कि दोनों कंट्रीज़ में ये सेम यूज़ हो, राइट। लाइबेरिया भी इंडिया के स्टैंडर्ड को अपनाए, इंडिया के फार्माकोपियो स्टैंडर्ड्स को हम अपना सकें, एक क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन की जा सके एंड जो प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो इंडिया के हैं वो लाइबेरिया भी फॉलो कर सके, करेक्ट। सो टेक अ नोट ऑफ दिस। यहाँ पे इसको पब्लिश करने वाला कौन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है एंड लेटेस्ट एडिशन है इंडिया फार्माकोपिया 2022। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट की हम बात करते हैं जो बताता है कि इंडिया में जो इनइक्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई हमें दिख रही है एंड एक डाटा दिखाता है कि जो टॉप 10% है ये ओन करते हैं ऑलमोस्ट 65% ऑफ द टोटल वेल्थ को, वहीं पे जो टॉप 1% है ये होल्ड करते हैं ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल वेल्थ जो इंडिया में है। यहाँ पे अगर हम देखें जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो अप्रॉक्सीमेटली 6200 यूरोज़ है अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर पैरिटी एंड जो एवरेज हेल्थ है इट इज़ अबाउट 28,000 यूरोज़। वहीं पे जो वीमेन है इंडिया में दे अर्न ओनली 18% ऑफ द लेबर इनकम एंड हैव लो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन बिलो ग्लोबल एवरेज ऑफ 34% इनकम एंड 51% एम्प्लॉयमेंट, राइट स्टूडेंट्स, मार्क करेंगे। तो इंडिया में जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती हुई जा रही है। थर्ड एडिशन था इस रिपोर्ट का, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। किसके द्वारा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। आरबीआई ने इशू की गाइडलाइंस ऑन ट्रांजैक्शन अकाउंट अक्रॉस 7 कैटेगरीज फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज़। किन किन के लिए किया है एंड ये क्या किया है वो आप पीडीएफ से हमारे ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, राइट। आपको एक क्लैरिटी देखने को मिलेगी, जैसे कमर्शियल बैंक्स के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, पेमेंट बैंक्स के लिए, लोकल एरिया बैंक्स के लिए, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए लागू किया है एंड 1 अप्रैल 2026 से लागू होता हुआ देखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो कैश क्रेडिट अकाउंट एक्सक्लूजन की बात की गई यहाँ पे कि आरबीआई ने एक्नॉलेज किया है कि जो भी कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, राइट, जो डिफरेंट है फ्रॉम करंट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स, करेक्ट, उनको मेनली यहाँ पे टाई किया गया टू द वैल्यू ऑफ द बोरोवर्स करंट एसेट। जो बोरोवर है उनके जो करंट एसेट्स है उससे ये क्रेडिट का कैश क्रेडिट की फैसिलिटी लिंक की गई, करेक्ट, एंड 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होते हुए दिखेगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स आरबीआई डाटा। इंडिया बैंकिंग सेक्टर हिट अ 20-year एनपीए लो, रिकॉर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉफिट सर्ज। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब किन्होंने ए ने लोन लिया बैंक से, मान लो 50 लाख का लोन लिया एंड ये 20 लाख ही पे कर पाया, बाकी 30 लाख पे नहीं कर पाए, तो ये एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। 30 लाख का लोन यहाँ पे रिकवर नहीं कर पाया। सिमिलरली किसी ने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया, प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है बैंक के पास, लोन नहीं कर पाया, प्रॉपर्टी भी सेल नहीं हो रही है, ये भी एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, राइट। तो ये डाटा बताता है आरबीआई का कि 20-year लो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमें डाटा भी देखने को मिल रहा है, करेक्ट। ये 2018 में 11.46% था जो कि डिक्लाइन होके हो गया 2.31% एज ऑफ मार्च 2025, ये लोएस्ट है 20 साल में,
करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। वहीं पे अगर हम देखें जो बैंक डिपॉजिट्स हैं, क्रेडिट्स हैं, वो ट्रिपल होते हुए दिखे हैं। बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर हमें बढ़ती हुई दिखी है। जो क्रेडिट्स एंड डिपॉजिट्स हैं वो ट्रिपल हो गए हैं। डोमेस्टिक क्रेडिट इंक्रीज होता हुआ दिखा है 66.91 लाख करोड़ से ऑलमोस्ट 181.34 लाख करोड़। जो डोमेस्टिक डिपॉजिट्स हैं ये इंक्रीज हो गए हैं 88.35 लाख करोड़ से टू 231.9 लाख करोड़ तक, राइट। तो मार्क करके चलेंगे इस डाटा को। इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक स्टूडेंट्स। इन्होंने अप्रूव किया फाइनेंसिंग ऑफ $600 मिलियन फॉर क्लीन एयर प्रोग्राम्स इन उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो $600 मिलियन, राइट, यहाँ पे अप्रूव किए गए। वर्ल्ड बैंक कह रहा है हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में काफ़ी पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 700 प्लस का AQI देखने को मिल रहा है, 900 तक का AQI जा रहा है कई जगह पर दिल्ली एनसीआर रीजन में, नॉर्थ इंडिया में। तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, करेक्ट। इवन हम देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा ग्रैप 4 इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसके अंडर स्कूल्स में बोला गया कि आप वर्क फ्रॉम होम दीजिए, क्लासेस फ्रॉम घर से बच्चे क्लासेस लेंगे। ऑफिसेज में 50% वर्क फ्रॉम होम बोला गया है। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। ये होता है ग्रैप 4 लगना, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब क्या हो रहा है कि ये कोई आज एक साल की बात नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, राइट। पॉल्यूशन बहुत टाइम से है, सरकार के द्वारा बीट फंडिंग, आप फंडिंग गैप कह लीजिए, कोई भी चीज़ कह लीजिए, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी स्टेप इन किया और बोला कि हम आपको $600 मिलियन की फंडिंग अप्रूव कर रहे हैं, आप अपना एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल में कीजिए यूपी एंड हरियाणा में। इसके लिए हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक $300 मिलियन प्रोवाइड कर रहा है ऑलमोस्ट टू यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम। 10 साल का ये प्रोग्राम रहेगा। वहीं पे हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 24 साल का प्रोजेक्ट रहेगा, इसके लिए $300 मिलियन यहाँ पे अब फाइनेंसिंग प्रोवाइड करा रहा है। कौन? वर्ल्ड बैंक। तो क्या ये पॉल्यूशन कम होता हुआ दिखेगा? एंड अनदर इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है कि इस पैसे की जवाबदेही, जो ये वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, करेक्ट, इसकी प्रॉपर ऑडिटिंग भी होनी चाहिए कि पैसा गया कहाँ, राइट। पैसा लग रहा है तो पॉल्यूशन से हमें वो रिजल्ट भी देखना चाहिए कि पॉल्यूशन कम हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी मेंटेन होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन किया है। 1685 करोड़ रुपीज़ का ये लोन रहेगा नाबार्ड के साथ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए ओडिशा में। एक जगह से दूसरी जगह तक पावर ले जाने के लिए, उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए, उस एनर्जी को जनरेट करने के लिए, लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लोगों के घर तक इलेक्ट्रिसिटी जा सके, एरिया तक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, तो प्रॉपर एक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ओडिशा में ये फाइनेंसिंग अमाउंट हुई 1,0685 करोड़ रुपए का ये लोन रहेगा। अब ये लोन है तो इसका बेसिकली इंटरेस्ट भी रहेगा 7.75% का इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर। टाइम मैगजीन इनको नेम किया गया, इन्होंने नेम किया आर्किटेक्ट ऑफ द एआई 2025 पर्सन ऑफ द ईयर को, जैसे इलॉन मस्क, राइट। अगर हम इंडिविजुअल्स के नाम देखें, इलॉन मस्क, जेनसन हुआंग जो कि CEO हैं एनवीडिया के, मार्क जकरबर्ग मेटा के CEO, सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के CEO, राइट, फीफी ली एआई पायनियर एंड फाउंडर ऑफ वर्ल्ड लैब्स। तो इन सबको यहाँ पे नेम किया गया एआई आर्किटेक्ट्स या फिर आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई, क्योंकि ये लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं एआई की फील्ड में, एआई को ग्रो करने के लिए। इवन हम देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भी अनाउंस किया गया कि हम 15 से 20 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में आने वाले 4 से 5 साल में। वहीं पे अगर हम अमेज़ॉन की बात करें, इन्होंने बोला कि हम 30 बिलियन डॉलर तक इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 4 से 5 सालों में इंडिया में, ताकि, और ये दोनों क्यों? क्योंकि इंडिया में एआई डाटा सेंटर्स बनाने का काम किया जाएगा, करेक्ट। इवन गूगल बना रहा है $1 बिलियन का डाटा सेंटर रहेगा, ये एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर होने वाला है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे बहुत सारे हमें डाटा सेंटर्स आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स के ऊपर। इंडिया होस्ट करेगा इनॉग्रल मतलब पहला एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप। कब? मार्च 2026 में 9 से 14 मार्च तक ये इवेंट होगा, कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप, एंड इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट एवर एडिशन यहाँ पर इसका, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो तो इंडिया ने बिड किया था कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के जो होंगे वो हम इंडिया में होस्ट करना चाहते हैं, एंड इंडिया की बिड अप्रूव हो गई है। हम अहमदाबाद गुजरात में ये गेम्स होस्ट करेंगे। 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए भी हमने बिड किया है, लेकिन उसका भी कोई फाइनल अप्रूवल नहीं आया है, बट हमें 2030 के कॉमनवेल्थ का अप्रूवल मिल गया कि हम अहमदाबाद गुजरात में इन गेम्स को होस्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं ऑबिटरी पे स्टूडेंट्स। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह पाटिल, इनका निधन हो गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, 90 की एज में इनका निधन हो गया। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, 1935 में इनका जन्म हुआ था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं, राइट। एंड इनका भी ये 10 स्पीकर थे लोकसभा के 1991 से लेकर 1996 तक। एंड इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी 12 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन, ताकि पीस को प्रमोट किया जा सके, डिप्लोमेसी को प्रमोट किया जा सके एंड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सके ग्लोबली। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद इंटरनेशनल यूनियन हेल्थ कवरेज डे। 12 दिसंबर को ये डे ऑब्जर्व करते हैं ताकि जो एक हमारे हेल्थ सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई क्वालिटी हेल्थ स्टैंडर्ड होने चाहिए, बेटर सर्विसेज होनी चाहिए, राइट। एंड किसी भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए किसी भी कस्टमर पर, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम ज़रूर मार्क करके चलेंगे, पूछे जाने के पूरे चांस हैं। अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट, वी आर सिक ऑफ इट, मतलब जो राइजिंग हेल्थ कॉस्ट हैं हम उससे बहुत परेशान हैं, ये थीम बताती है। एंड उस कॉस्ट को, राइजिंग कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ पे स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट है, अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई। ये स्कीम क्या है बेसिकली, देखो स्कीम बोलें या फिर हम इसको पोर्टल बोलें, पोर्टल मतलब वेबसाइट। ये क्या करती है वेबसाइट कि सरकार के द्वारा, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं। अब इस वेलफेयर स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक तक, सिटीजन तक कैसे पहुंचेगी, तो वो इन वेबसाइट्स के थ्रू, इन पोर्टल्स के थ्रू पहुंचेगी। तो यही एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है, मेरी योजना पोर्टल, जिसके अंडर जो भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, राइट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का ये काम करेगा ये पोर्टल मेरी योजना, करेक्ट। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है मेरी योजना पोर्टल, मार्क करके चलेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग काफ़ी स्ट्रांग होगी। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखा करो, बड़े ही रिफाइंड वे में टू द पॉइंट कंटेंट आप तक आता है, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। देन इसके बेसिस पे वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज वीडियोस हम अपलोड करते हैं रेगुलरली। ये MCQ फॉर्मेट में रहती हैं, बड़े ही टू द पॉइंट एंड एग्जाम सेंट्रिक ये MCQs रहते हैं, जिससे आपकी लर्निंग काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे। नेम दैट एंटिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिन्होंने कोलैबोरेट किया गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ टू ऑर्गेनाइज उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट अक्टूबर के महीने में। तो नेम दैट एंटिटी, वो एंटिटी कौन सी रहेगी, वो है इंडिया AI मिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ ड्रग जो कि डिस्कवर किया गया इंडिजीनियसली इन इंडिया टू कॉम्बैट ड्रग रेजिस्टेंस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो कि है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। नेफिथ्रोमाइसिन इन हाउस डेवलप की गई है इंडिया के द्वारा एंड ये पहली इंडिजीनियसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है इंडिया की। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो इंडिजीनियस फायर आर्म को जो प्रोक्योर किया गया बाय इंडियन आर्मी अंडर 2700 2700 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जहां पे 4.25 लाख यूनिट्स को प्रोक्योर किया जाएगा। ये है आपकी कार्बाइन्स, राइट, ये आपकी असॉल्ट राइफल है। एंड इसमें से भी अगर हम देखें तो 2.5 लाख तो बनाएगा भारत फोर्ज, राइट। बची 1.75 ये बनाएगा अदानी PLR सिस्टम, अदानी PLR सिस्टम के द्वारा। तो टोटल कितनी हो गई, 4.25। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जिन्होंने MOU साइन किया कोल इंडिया लिमिटेड के साथ ताकि स्टैब्लिश किया जा सके सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी अक्टूबर के महीने में। तो कौन सा वो इंस्टीट्यूट रहेगा, वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी इंडिया की क्या रैंक रहेगी, इंडिया 85th पोजीशन पे आ जाता है, राइट। इंडिया की रैंक 85th है एंड वीजा फ्री एक्सेस कितना है, 57 कंट्रीज को। टॉप किसने किया, सिंगापुर के द्वारा टॉप किया गया एंड वीजा फ्री एक्सेस कितनी कंट्रीज का है, 193 कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो अबू धाबी UAE में हुई। यहां पे अगर हम देखें A, B और C तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 78th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया, जो कि कोलंबो श्रीलंका में हुई। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, B सही है, C सही है, A गलत है, A हमारा आंसर है। इस सेशन को डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जो कि डायरेक्टर जनरल है WHO के, उनके द्वारा चेयर नहीं किया गया था। किनके द्वारा चेयर किया गया था इसको, वो है कौन, किनके द्वारा चेयर किया गया था, तो राइट ऑप्शन है नालिंदा जयतिसा, नालिंदा
जयातिसा, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, इनके द्वारा चेयर किया गया था। अब ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने अलॉन्ग विद इंडिया एस्टेब्लिश किया 20 मेंबर का इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप अक्टूबर के महीने में टू एनहेंस पार्लियामेंट्री कॉपरेशन एंड बायलैटरल रिलेशन। तो कौन सी है वो कंट्री? वो है पनामा। राइट ऑप्शन है पनामा, एंड ये 20 मेंबर का इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई द यूएन ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट हाई रिस्क फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि बताती है कि 391 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एट अ हाई रिस्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आइडेंटिफाई द यूएन ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नायरोबी, कीनिया में। इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। फिर आ जाते हैं, हाउ लॉन्ग विल इंडियाज हितेश कुमार एस मकवाना इलेक्टेड टू सर्व एज द co-chair of United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and Pacific Region along with वू सोंग चू, जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के हैं। तो कितने टर्म के लिए पूछा गया, कौन सा टर्म रहेगा, क्या ईयर का टर्म रहेगा इनका? तो 2025 से 2028 के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट करे गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द मर्सर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, उस कंट्री को मेंशन करो विच इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द पेंशन इंडेक्स। तो अगर यहाँ पे हम देखें, फिलीपींस टॉप 5 में नहीं आता, नीदरलैंड फर्स्ट, आइसलैंड सेकंड, डेनमार्क थर्ड, सिंगापुर फोर्थ एंड फिफ्थ पे आ जाता है फिर इजराइल। राइट, इंडिया अगर हम बात करें 52nd पोजीशन पर है यहाँ पे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रैंकिंग जो रिलीज की गई, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टॉप 5 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल फोर्सेज। तो यहाँ पर अगर हम देखें टॉप 5 में चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी फोर्स टॉप 5 में नहीं आती। टॉप पर कौन है? अगर हम देखें, यूएस एयरफोर्स फर्स्ट, देन यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, मैं लिख देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स फर्स्ट पे, फिर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सेकंड, रशियन एयरफोर्स थर्ड, देन यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी फोर्थ, यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स फिफ्थ, इंडियन एयरफोर्स देन 6th पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द की फाइंडिंग्स ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिलीज की गई बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर मंथ। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट गेन रशिया रैंक फर्स्ट फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया एंड चाइना। तो नहीं, सबसे पहले आ जाता है रशियन फेडरेशन, ये सही है। इसके बाद आता है ब्राज़ील, फिर आ जाता है कनाडा, देन इट इज़ यूएसए, फिर यूएसए के बाद आता है चाइना एंड फिर इंडिया। फॉरेस्ट गेन में मतलब कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ता हुआ देखा। नेक्स्ट, चूज द फाइनेंशियल सेंटर दैट इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द 38th ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, जो कि रिलीज किया गया अक्टूबर के महीने में बाय चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड ZN पार्टनर्स। तो चूज द फाइनेंशियल सेंटर, वो कौन सा फाइनेंशियल सेंटर रहेगा? वो है मुंबई, यहाँ पे टॉप 5 में नहीं आता। न्यूयॉर्क टॉप पर, देन लंदन सेकेंड पर, हांगकॉन्ग थर्ड पे, सिंगापुर फोर्थ पे, सैन फ्रांसिस्को फिफ्थ पर, जिफ्ट सिटी 6th पर, देन मुंबई 7th एंड देन इट इज दिल्ली। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट, जो कि साइन किया गया बिटवीन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक का, ताकि जो डेवलपिंग नेशन है उनको लैंडिंग बढ़ सके, उनको हम ज़्यादा लोन दे सके ताकि फर्दर वो डेवलपमेंट कर सके अपने एरियाज़ में। तो $3 बिलियन का ये सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये पहला है वर्ल्ड बैंक के साथ एंड छठा है विद अदर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। नेक्स्ट, बेसिकली होता क्या है एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट? एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट बेसिकली ये होता है ताकि एक तरीके का ये रिस्क मैनेजमेंट टूल है जिससे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है ये अपना पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन रिस्क को कम करते हैं बाय स्वैपिंग एक्सपोजर फ्रॉम द कंट्रीज विद लार्ज सॉवरेन लोन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने कंस्टिट्यूट की एक वर्किंग ग्रुप दैट प्रपोज इंक्रीजिंग ट्रांजैक्शन फीस फॉर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सच एज NSE क्लियरिंग लिमिटेड इन अक्टूबर। सो हु हेडेड द सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड वर्किंग ग्रुप? RS गांधी जी के द्वारा हेड की गई इसको। राइट, नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विद ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड? राइट, जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन स्पिरिचुअल एजुकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट एंड मैरीटाइम इनोवेशन को बढ़ावा देना है। तो किनको ऑनर किया गया ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड से? हु वाज ऑनर्ड? अबू सुफियाना खारखरोव। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 2025 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीता फॉर हिज बुक टाइटल द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स? तो किनके द्वारा जीता गया? ये हैं सुनील अमृत। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अक्टूबर यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इनको कन्फर किया गया ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल अपॉन नीरज चोपड़ा इन विच वॉलंटरी मिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया? तो
यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल किस वॉलंटरी फोर्स ऑफ इंडिया में? टेरिटोरियल आर्मी में। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज स्वॉर्न इन एज द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर इन अक्टूबर आफ्टर अ मिलिट्री कूप कन्फर्म्ड बाय द हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ मेडागास्कर। तो हु वॉज स्वॉर्न इन एज द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर? वो है माइकल रेंड्रियानी। नेक्स्ट, अभी गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हमने देखा कि रीशफलिंग हुई है कैबिनेट की। 19 तो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स आए हैं एंड 6 को रिटेन किया गया, तो टोटल है 25। पूछा जा रहा है कौन बने हैं 5वें डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? तो कौन बने हैं? वो हैं हर्ष रामेश कुमार सांघवी जी। नेक्स्ट, किनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन अक्टूबर के महीने में, जो कि फर्स्ट वीमेन बनी टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन? वो हैं शांता रंगस्वामी, राइट, फर्स्ट वीमेन टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, टेन्योर बताओ जस्टिस प्रतिभा एम सिंघी का ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जिनको अभी अपॉइंट किया गया एज द चेयर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस पे। तो इनका टर्म कब से कब तक रहेगा? 2025 से 2027 तक का इनका टर्म रहेगा। फिर आ जाते हैं किनको इलेक्ट किया गया जापान का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर? वो है सनाए तकाची। ये किनको सक्सीड करेंगी? ये सक्सीड करेंगे शिगुरु इशिबा को। नेक्स्ट, इन अक्टूबर एमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने एक्वायर किया 60% स्टेक इन आरबीएल बैंक थ्रू अ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स वर्थ 26,850 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी डीआरडीओ इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिजिनियस मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम विद इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ कितने ऑल्टीट्यूड से इसको टेस्ट किया गया? तो 32,000 फीट से इसको टेस्ट किया गया। इंडियन एयरफोर्स के लिए रहेगा और इंडियन एयरफोर्स के 2 कमांडर्स के द्वारा ही इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, डॉक्टर वी नारायणन जो कि चेयरमैन है इसरो के, इन्होंने अनाउंस किया इंडियाज मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान को दैट इज शेड्यूल्ड फॉर 2027 व्हाइल इसरो एम्स टू लॉन्च द फर्स्ट क्रूड मून मिशन बाय किस साल तक? तो गगनयान 2027 में है और इंडिया इसरो एम कर रहा है पहला क्रूड मून मिशन, जो कि मून पे इंसान को भेजने की बात की जा रही है, कब तक? 2040 तक। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेम द फाइटर जेट दैट अनवेल्ड द यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस राजनाथ सिंह इन अक्टूबर एट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिट्स नासिक फैसिलिटी। तो वो फाइटर जेट कौन सा है? वो है तेजस मार्क 1 फाइटर जेट। इसके बाद आ जाते हैं, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करो जो कि रिप्रेजेंट किया गई बाय ओलंपिक चैंपियन एरियाना टिटमस के द्वारा। इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है स्विमिंग से। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज आवर होमवर्क क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज बीन पीएमओ रीनेम्ड? Right? Prime Minister's office has been renamed to what? Second question, which brand is the official beverage partner for Tata Women's Premier League for 26 and 27 season? Third question, tell me recently which edition of Konark Festival was observed and where is this observed? Fourth question, our country India has been re-elected to, okay, I have given the answer here itself. You tell me who became the chairperson of International IDEA. This is for 2026 term, right? Who has been appointed as the chairperson of International IDEA for 2026? Then fifth question, which is the world's largest city? World's largest city. Also tell me which is India's largest city. So these are your 5 homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video, and also hit the like button, students. So that's all for the day. Thank you and have a nice day.